बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनाज़ा गफ़ूर और आप सबको जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आज हम किड्स मैथमेटिक्स बुक 5 यूनिट 4 डेसिमल नंबर्स एंड परसेंटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है कंपेयर नंबर्स टू प्लेस साइंस, फॉर एग्जांपल स्मॉलर देन, greater than and is equal to, and then another objective is to arrange the number in either ascending order or descending orders. So चलते हैं अपनी किताब की जानिब। On page 52 we will start to study about comparing and ordering decimals. In comparing, a comparison is done to determine which decimal is greater, smaller or equal to the other decimal number. जबकि ordering means to arrange given decimal number in an ascending or descending order. So dear teachers, अब हम चलते हैं। Example 1. Amna and Fawzia took part in race. Amna finished the race in 1.56 minutes while Fawzia took 1.51 minutes to complete the race. Find who took more time. सो सबसे पहले अगेन हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज़ करेंगे एंड वी हैव टू रिमेंबर कि हमने प्लेसिंग डेसिमल की डेसिमल प्लेसिंग के नीचे ही करनी है। सो नाउ लेट्स सी टू कंपेयर बोथ डेसिमल नंबर्स। फर्स्ट वी राइट 1.56 एंड 1.51 इन अ प्लेस वैल्यू टेबल जैसा कि नीचे गिवन है। Now when we compare such decimals, first we compare the digits in ones place. यानी कि जब आपने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर प्लेस किया तो डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द नंबर्स आर ऑलरेडी देयर। जैसे आपने वंस को वंस के नीचे लिखा, डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट के नीचे लिखा, टेंस के नीचे आए और हंड्रेड के नीचे। नाउ जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से जो फर्स्ट नंबर है उसको कंपेयर करेंगे। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में वंस हैं, सो वंस को वंस के साथ जब कंपेयर किया तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे डिजिट 1 है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। द डिजिट 1 इन द वन प्लेस इज़ द सेम इन बोथ नंबर्स, सो वी कंपेयर द डिजिट्स ऑफ द 10th प्लेस। यानी कि 1 की प्लेसिंग के ऊपर जो डिजिट 1 है वो दोनों ही नंबर्स में सेम है, इसलिए ये इक्वल हैं। हमने फाइंड आउट करना है कि हु टुक मोर टाइम। सो देयरफॉर जब ये दोनों इक्वल हैं हम मूव कर जाएंगे 10th प्लेस पे। अब 10th प्लेस पे हमें 5 गिवन है और दोनों नंबर्स पे 5 है, सो अब हम मूव कर जाएंगे 100th प्लेस पे। नाउ लेट्स सी, सो वी कंपेयर द डिजिट्स इन द 10th प्लेस। द डिजिट 5 इन द 10th प्लेस इज़ ऑल्सो द सेम। नाउ वी कंपेयर द डिजिट इन द 100th place. The digit 6 in the 100th place is greater than the digit 1. यानी कि जो 6 गिवन है वो 1 से बिगर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, कौन सी वैल्यू बिगर है? बिल्कुल 1.56. So we can say, so 1.56 is greater than 1.51. अब अगर आप इसको बॉक्स में देखिए तो एक साइन गिवन है 1.6 ग्रेटर देन 1.51। हमें इस साइन को समझना भी है और इसको इस्तेमाल भी करना है। सो एंड वी हैव टू रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इन की फैक्ट दैट टू कंपेयर टू डेसिमल नंबर स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट। कि जब भी हम कंपैरिजन करेंगे हमेशा वो कंपैरिजन जो है वो लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे होल नंबर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2, लेट्स कंपेयर 6.25 एंड 6.79। तो सबसे पहले हम इसको प्लेस वैल्यू टेबल में प्लेस करेंगे एंड देन फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम वंस को कंपेयर करेंगे। इस क्वेश्चन में भी वंस की वैल्यू जो है वो 6 एंड 6 है, वो सिमिलर है। वी मूव ऑन टू द 10th प्लेस। वहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है, वो है 2 एंड 7। नाउ 7 इज़ ग्रेटर देन 2, सो इन दैट केस 6.79 इज़ ग्रेटर देन 6.25 एंड इन अदर वर्ड्स 6.25 इज़ स्मॉलर देन 6.79। तो हम क्या लिखेंगे, 6.25 is smaller than 6.79.
यानी कि अगेन इफ़ यू लुक इन द बॉक्स, यहाँ पे एक साइन गिवन है जो कि स्मॉलर देन का साइन है. So you will have to remember these signs, or also you have to remember that when we are comparing the decimal numbers, we always start from the left side. Now let's find out the ordering decimals. Ordering decimals means to arrange given set of decimal numbers in ascending or descending order. When decimal numbers are arranged from smallest to the greatest, it is called ascending order. When decimal numbers are arranged from the greatest to smallest, it is called descending order. यानी कि descend करना, ऊपर से नीचे आना. So now let's see the same through some example on page number 53. So let's arrange 6.28, 6.22, 6.25 in ascending and descending order. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? Place value table. So step 1, write the decimal numbers in a place value table. Step 2, now compare the digits starting from the left. Now we will see that in the ones place we find the digit 6, जो कि तीनों numbers में 6 है. इसका मतलब है we are going to move on to the next order, which is of the 10th. तो 10th में भी वैल्यू जो है वो डिजिट 2 की है, जो कि तीनों नंबर्स में सेम है. देन वी मूव ऑन टू द हंड्रेड्स प्लेस, जहाँ पे हमारे पास 8, 2 एंड 5 गिवन है. 8 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 2. सो इफ़ यू सी ऑन पेज नंबर 54, you will find out that 6.28 is the greatest number. So 6.28 is greater than 6.25 and also is greater than 6.22. And 6.22 is the smallest number, so therefore 6.22 is smaller than 6.25 and also 6.22 smaller than 6.28. So step 3 हमारा क्या होगा? For descending order, we arrange these numbers from greatest to smallest. So descending order would be 6.28, 6.25 and 6.22. अब हम देखते हैं ascending order को. For ascending order, we arrange these numbers from smallest to greatest. So in this example, सबसे हमारा smallest number क्या था? 6.22. So 6.22 and 6.25 and 6.28. So ये हमारा ascending order होगा. डियर टीचर्स, आई होप अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ.